Good morning, students. Morning. Morning, sir. Morning. So let's start vector space. So in the last class, I discussed you how to define a vector space. Okay. So I am just recalling. So a non-empty set V with two binary operation, say plus and dot, है ना? Where this plus is means it is your vector addition. This addition is a vector addition V cross V to V, and it is called internal binary operation. And to second one is dot or cross, that is your Scalar multiplication. yes, है ना? So you can say some field cross V. If I am taking f is a field, or I am taking here suppose some real number as a field in particular, so that is called your external, because you are taking scalar multiplication, so it is called external binary operation. So that is one. First one is your vector addition, and this one is your what? Scalar multiplication. Yes, that is your scalar multiplication. Just a minute. That is your scalar multiplication. I can write in different color for just highlighting. It is your scalar multiplication. Huh? It is scalar multiplication. And you know how we can define it. So I choose that this should be binary. This means they are closer, and then it will form a group. है ना? First is V is a group, abelian group. In fact, V is a commutative group. With respect to vector addition. Yes, with respect to vector addition, and then it has property, that is your scalar product properties. You can say alpha u plus v is equal to alpha u plus alpha v, alpha plus beta u is equal to alpha u plus beta u. Of course, for all uv belongs to vector space, and alpha beta, they are coming from field. So I am writing suppose r, and I am assuming here r is a field. There are so many fields, but here we have considered set of real number as a field because it is a field. So they are scalars basically, and we have alpha of beta u is equal to alpha beta u, because they are scalar, so they will be following associativity, is equal to beta alpha u, है ना? And one more property it was there, one u is should equal to u for all u in V. So these are the properties. Then a non-empty set will form a vector space, and you can see that the smallest order vector space will be what? If I am asking what is the minimum element, any idea? कम से कम कितने एलिमेंट होंगे फॉर फॉर्मिंग अ वेक्टर स्पेस? So zero vector के साथ ले लें सेट को. तो मतलब कम से कम एक, है ना? We need at least one, because here it is forming a group with respect to addition, remember, not multiplication. So it will not behave like a field, it is a different structure. So at least zero should be there, है ना? If zero is there, it will form a vector space. It is basically called a trivial vector space. इसे हम trivial vector space भी कहते हैं, है ना? Trivial vector space, and sometimes we denote it by v0. Okay, it is the notation from your book. So zero, if you have only zero, it will form a vector space, because zero
is a trivial group also. Rest of the properties holds naturally. So this is a trivial vector space. So at least one element should be there. So it is the first example which is a vector space. है ना? 0 is there. Similarly, we can construct some more vector spaces. Like next example, I am taking. It is your example 3.1. Page number 64. So now I am taking suppose Vn. So n means what? N say I am denoting just the number of ordered tuples. So Vn is what? Vn be the set of all ordered n tuples of real numbers. ना? So Vn has element of the form. Vn में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे? If you will see x1, x2 and so on xn. Okay. जैसे आपका Rn था, here we are using Vn because we are using this symbol as a vector space. R1 में आपके पास you have only one element. R2 means you have two. है ना? Ordered pair होता है जैसे 1, 2. R3 means you have three tuples 1, 2, 3. Similarly, Vn is means it is a vector space, and now where x1, x2, xr, what are these? They are some real numbers, of course, scalars, है ना? So Vn, now Vn is a vector space. Our claim is that this Vn is a vector space. Okay? Vn is a vector space. So I can prove it here. You can prove it. है ना? So you can see here that the elements are simply what? Real numbers. So if they are real numbers, they will be satisfying the properties of real numbers. So first thing, if you see two vector addition, है ना? First thing I will see vector addition is closed or not. So you know, suppose I am taking two vectors, let u is some vector x1, x2 and xn, and suppose v is some vector y1, y2 and so on yn. So what about u plus v? What is the vector addition of these two n tuples? It is called n tuples. N tuples, because these are n. We use n tuples the word. Tell me what is u plus v? Component wise addition. Okay? x1 plus y1. Yes, it is called component wise addition. X1 plus y1, x2 plus y2 and so on, xn plus yn. Okay, this is the vector addition, and this is again a vector. You know, sum of two vector is again a vector. है ना? It is basic vector calculus. So this will also belongs to Vn because it is again n tuple. And similarly, if you are taking scalar product alpha u, it will become alpha x1, alpha x2 and so on, alpha xn, which is again a vector, n tuples vector. It is also big. So this vector addition and scalar multiplication is very well defined here. Okay, now rest of the property are satisfied. You know, you can see here rest means what? Associativity will hold here. U plus v plus w will equal to, so if it is I am saying it is your closure property. You know, first one is closure, second is associativity. So associativity will be holding here because they are just real numbers. So when you will add the real numbers, they will commute. You know, so you can have say that it holds naturally. It holds naturally as x1, x2, xn they are real numbers. इतनी लाइन आप लिख सकते हैं. Next is the identity. Tell me what is the identity of this Vn? What is the identity? सर 0 हो जाए. Zero vector.
0 0 0 0. यस, बाकी लोग अपना माइक म्यूट करें भाई जब क्लास चल रही है, तो जब मैं पूछूं तब माइक अपना अनम्यूट किया करिए. So identity is yes 0 0 because n tuples, so up to n times, and it belongs to Vn. We know very well it is the member because we don't have restriction that some tuple should be non-zero. अगर यहाँ पर ऐसी restriction लग जाती है suppose कि x2 is not 0 है ना, then identity will not exist here. Vn will not a vector space. अगर ये कंडीशन दे देते मान लीजिए, ऐसे हम प्रॉब्लम्स आगे करेंगे कि Vn is the collection of n tuples such that x1 is not 0, तो उस केस में क्या होता है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना. In that case it will not form a vector space, but here it is not a condition, so I can take all the vectors 0. So 0 belongs to Vn. Existence of inverse, what is the inverse of any vector? Minus, Negative of the vector. माइनस लगा देंगे है सब ना. पे. हाँ, this and this belongs to Vn because we have what, रियल नंबर्स. अगर यहीं पर ये रियल नंबर्स नहीं करके सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कर देते तो भी ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनता, क्योंकि नेचुरल्स में आई कैन नॉट टेक माइनस. यस सर. So here inverse exists as well. You will be take any vector, then I can take minus of that. So it holds there. Fifth property is, you know, commutativity. So commutativity also holds naturally. U plus V is equal to V plus U. This also holds naturally. ना, because we have vector addition. Vector product होता अगर तो vector product is not commutative, but here we have vector addition. You can check it. Take U plus V, x1 plus y1, x2 plus y2. Then y plus x, v plus u will become y1 plus x1, and y1 plus x1 is equal to x1 plus y1 because they are real numbers. So in this way, this commutativity holds naturally. So it is having all the property, and rest of the properties, है ना, like alpha u plus v, these are, if you see, it is nothing but it is just a simple arithmetic. You adding two numbers and then multiplying, and because all the vectors are having real numbers, so these all properties hold naturally. So you can write a simple line कि rest of the properties holds naturally. You can write this here. Okay. So Vn is a vector space, है ना. और इसी में मैंने आपको बता भी दिया कि एग्जाम्पल विच इज नॉट वेक्टर स्पेस. अगर यहीं पर मैं रेस्ट्रिक्शन लगा दूं, सपोज x1 इज नॉट 0, सपोज इफ आई एम अप्लाइंग रेस्ट्रिक्शन x1 नॉट 0, तो यही एग्जाम्पल बन जाएगा इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, बिकॉज इन दैट केस you will be not having the identity. Okay, so if I am putting the condition, it will become a vector space. If I am putting this condition, it is not a vector space, and just for a example I am telling you. Similarly, you can take, so in fact this Vn is a vector space. So Vn means n tuple. So in general you can say V1, V2, V3, all the vector space. V1 means what? In V1 means you will be having only one vector x, where x belongs to some real number. So in fact V1 is nothing but V1 will be what? Real numbers. V2 means what? You will be having two vectors x1, x2, है ना, where x1, x2 they are some scalars. So V2 is also a vector space, है ना. V1, V2 means you can say it is just like your R2 plane. Similarly V3 means I will be having triplets x1, x2, x3, where these x1, x2, x3 they are coming from scalars R, है ना. So this is also a vector space. V3 is like, it is like your R3, है ना. So in fact your Rn is a vector space, R is a vector space, R1, R2. So we will be noting in vector space it y V1, V2, V3. So these all are vector spaces. You know what is the identity. Here the identity will be 0, 0. In V3 identity will be 0, 0, 0 3 times. Similarly inverse and rest of the things you can find. Is it clear?
Yes, बोलिए। sir. हाँ, so similarly one more example you can take, example 3.2 is in your syllabus. So you can see here that this is also one more example I am taking, the set of all real valued functions. Next example 3.2, page 66, the set of all real valued functions, real valued functions, suppose denoted by f I, they are denoting by this, real valued functions defined on interval I, defined on the interval I, किसी इंटरवल I पर डिफाइंड है ना, मींस इफ यू विल सी मींस हाउ दे विल बी लुकिंग लाइक f फ्रॉम a कॉमा b टू r, इस टाइप के फंक्शन डिफाइंड ऑन सम इंटरवल, है ना, यू कैन टेक क्लोज इंटरवल, और तो इस टाइप के फंक्शन जो है ये क्या कहलाते हैं, जिसकी इमेज रियल नंबर होती है, दे कॉल रियल वैल्यूड फंक्शन। जैसे आपने पढ़ा, जैसे मान लो मैं कह दूं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सम एक्स प्लस वाई, एक फंक्शन बन गया ये, और सपोज आई हैव एक्स वाई एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई एंड सो ऑन, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये सब क्या है, ये रियल नंबर है। यहाँ पर अब रेस्ट्रिक्शन अगर इंटरवल पर डिफाइनिंग ऑन सम इंटरवल आई, तो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन दे दी गई, ये आपका आई जो है इस सम इंटरवल, ये सब आपके रियल वैल्यूड फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टू वैल्यूज है। So the set of all real valued functions. So here you have point-wise addition and scalar multiplication. This fi becomes a this is a real vector space. Here आपका addition, what is the addition and what is the multiplication? Here we will be having point-wise addition, है ना? Point-wise addition means what? You have to add two functions. Actually now the elements of the set is what? They are some functions. So how you will be adding functions? You know, if you want to add f plus g, so how you will be writing fx plus gx, you know, that is called the point-wise addition. So how you will be defining f plus gx is equal to fx plus gx. It is called point-wise addition. And what about multiplication, scalar multiplication? Scalar multiplication. Scalar multiplication will be what? It is called like you have alpha of fx. So it will be what? It will become your alpha fx. है ना? They have defined it there. Alpha fx will become what? Alpha F of alpha. fx. है ना? ये दो होगा. In Yes, this sir. way, we will be defining. So here you can see this holds associativity, sum of two functions, it holds associativity, f plus g plus h is equal to fx plus gx plus hx, है ना? What is the zero function is the identity, zero function, ना? 0x is equal to, zero function is what? Whose image is always zero. So zero is a real number. So the zero function will be the identity. What is inverse function? Minus f. Minus f is the inverse of f. Okay. And it holds associativity also, it holds commutativity also. F plus g is equal to g plus f. So if you have some function, you can define in this way. Okay. So this is also an example of vector space. Similarly, you can find और polynomials का दे रखा है. You can try example 3.4. You will see it. है ना? Some example you will construct by yourself.
क्या क्या वेक्टर स्पेस बनना है? मैट्राइसेस ले सकते हैं आप. सपोज आई एम टेकिंग कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्राइसेस. सपोज M is a set. ना, I am taking suppose only 2 by 2 matrix. 2 by 2 matrix, suppose A, B, C, D, where A, B, C, D belongs to some real numbers. So this will also form a vector space. You can see here, है ना? Here, because sum of two matrix, you know, they holds associativity always, है ना? And what is the identity? Additive identity here? Zero matrix. Okay. What is the inverse? Minus A, minus B, minus C, minus D. So here you will be having matrix product will be what? Matrix addition A plus B. This belongs to M, and scalar multiplication alpha into A. This also belongs to M. So under the matrix addition and scalar multiplication, it will form a vector space. Commutativity holds with respect to addition. A plus A, B is equal to B plus A. है ना? With respect to multiplication, commutativity does not hold in general, but with respect to addition, it holds. And rest of the properties, alpha O A plus B, you can check it. It will be coming the same. So rest of the properties holds naturally. So the collection of all matrices of this 2 by 2 order, I have taken particular 2 by 2. You can take 3 by 3. This forms a vector space. So there are several examples which you can see they are forming a vector space. Okay. Any doubt you can ask? You Sharma, Yes, sir. are you getting? Yes, sir. Good. Abdul Waseed, यस सर. समझ में आ रही है बातें? यस सर. स्टूडेंट्स आज काफी लेस दिख रहे हैं भाई. 2 बैच के ओनली 16 स्टूडेंट्स. चलिए सर. So in this way you can construct. अब आप जो है, it is your exercise. All of you will construct at least one vector space by yourself. खुद कुछ स्ट्रक्चर सोचिएगा. Set of polynomials, है ना? Yeah, you set of real numbers or something you try to construct and check whether it is forming a vector space or not. Then we have some important results on vector space. That is your first theorem, theorem 3.1.7. Theorem 3.1.7, page number 67. Very first theorem of vector space. In any vector space, in short I am writing VS. In any vector space, I will always use capital symbol V as a vector space. So they are saying these properties holds true. Alpha 0 is equal to 0 for every scalar alpha. B 0 U is equal to 0 for every U in V. C is minus 1 into U is equal to minus U for every U belongs to V. अब आप सोचेंगे कि सर ये क्या बच्चों वाली चीज करा रहे हैं. अल्फा 0 तो 0 होता ही है हमेशा. ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं. क्यों भाई? बिलाल जफर नहीं है आज क्या? बिलाल जफर? सर है तो हैं, अच्छा. हाँ, लेकिन सर वो उनका पता नहीं माइक वाइक का कोई प्रॉब्लम हो गई है शायद. अच्छा. आप कौन बोल रहे हैं? जयदेव सिंह? यस सर. अच्छा, चलो. तो देखो भाई, अल्फा 0 इज इक्वल टू 0. यू विल बी थिंकिंग यार व्हाट आर चाइल्डिश रिजल्ट्स, वी हैव अल्फा 0. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, here actually we want to show alpha 0 where alpha is coming from the field scalars and 0 coming from the vector. Means what? Here you have some vector space, here you have some real. So it is
दे आर सेइंग कि टेक वन वेक्टर फ्रॉम हेयर, तो यहाँ पर जब जीरो इन्होंने यहाँ पर लिया है तो इसका मतलब क्या है, दिस जीरो एक्चुअली इज अ जीरो वेक्टर, है ना. सो दे आर सेइंग टेक जीरो वेक्टर फ्रॉम हेयर, टेक अल्फा फ्रॉम हेयर, है ना, देन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज जीरो. ये हमें शो करना है. टिल फॉर यू हैव स्टडीड के x into 0 is equal to 0 because you are considering that all x and 0 they are coming from some same set from real numbers, है ना. आपको रियल नंबर से पता है कि अगर समथिंग प्रोडक्ट ऑफ जीरो है तो हम जीरो लिख सकते हैं डायरेक्ट. 0 into 2 is equal to 0 ऑलवेज, you know this thing. 0 into x मतलब 0 because you are considering always कि both the elements are coming from the same set of real numbers, है ना. But now because you have defined a vector space and in the vector space you have certain operations in your hand, जो प्रॉपर्टीज आपको हमने बताई. तो यहाँ पर अब हमें ये शो करना है कि इफ यू आर टेकिंग वन एलिमेंट फ्रॉम द वेक्टर स्पेस, सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द रियल नंबर्स, है ना, बोथ आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस, एंड इफ आई एम टेकिंग द प्रोडक्ट, तो इफ एनी ऑफ वन इज जीरो, ईदर इट इज अ जीरो वेक्टर और इट इज अ जीरो स्केलर, देन द रिजल्टेंट विल बी जीरो, है ना. ये प्रूफ करना है. और ये ध्यान रखना है कि जो जीरो आ रहा है ये जीरो स्केलर नहीं होगा, ये जीरो भी क्या होगा एक्चुअली, वेक्टर होगा ये ना. वेक्टर. हाँ. So this thing we have to prove actually by taking the vector space operations. It is not quite obvious. ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन आया तो आप लिख देंगे कि सर इट इज ऑब्वियस अल्फा जीरो इज जीरो, हैंस इट इज जीरो. जीरो ही मार्क्स मिलेगा उस पर आपको. Here we have to prove it कि what the operations we have, alpha zero is equal to zero. Okay. So you want to show alpha zero is equal to zero. I will start at the as the usual way. I will take the left hand side. So I have alpha into zero vector. I want to show it is zero. So because I know that V is a vector space, so if V is a vector space, so you know it will form a group also, and zero is the identity. Yes, sir. So zero is the identity. I can write this zero is equal to zero plus zero, है ना? Because zero is the identity. Identity की property क्या होती है? Yes, sir. Team add करोगे, it will give you the same. So I can write alpha zero plus zero. Now because it is a vector space, so by the property of alpha u plus v is equal to alpha u plus alpha v, I can write alpha 0 plus alpha 0. Okay, by this property alpha u plus alpha v. अगर मेरे पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती, I cannot apply, I cannot proceed after this term. इसके बाद मैं जब ही लिख सकता हूँ when I have this property. Is it clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I know this thing that because they are going to vector space and vector space is also a group, so there will be existing the inverse of this also, because alpha 0 is again some vector. So I can adding minus alpha 0 both sides. ये हमने ऐड करा, है ना. ये इसकी गारंटी क्यों मिलती है हमें? बिकॉज V इज अ वेक्टर स्पेस इज अ ग्रुप, तो इट विल बी हैविंग इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट, है ना. इसकी Yes, गारंटी sir. इससे मिलती है. अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो फिर आई कैन नॉट टेक दिस स्टेप आल्सो. तो व्हाट विल हैपन, तो व्हेन यू विल ऐड अल्फा, तो माइनस अल्फा 0 इज द इनवर्स ऑफ अल्फा 0, you know. So when you will be adding, the left hand side will become 0. You are adding it here, है ना, alpha 0. So I am adding minus alpha 0 on the left hand side as well as on the right hand side. यहाँ भी हमने ऐड किया. चलो अभी पहले लिख लो इसको ऐसे ही, माइनस अल्फा 0 प्लस अल्फा 0 प्लस अल्फा 0. And because these are inverse to each other, you know, inverse means they will give you the identity. So it will become how much? 0 is equal to, now look at here, है ना, these two sums were there and here we have minus alpha 0. These two sums were there and I have added this. So what will happen? I can take by the associativity this, I can write it is one vector. So by the associativity I can write minus alpha 0, है ना, and plus alpha 0. इन दोनों में मैंने associativity लगा दी and taking this vector outside because it has associativity also. Now again this is sum of inverse element, so it will become how much? 0 plus alpha 0, 0 vector, and you know 0 is the identity, so identity plus an element is equal to the element itself, so it will give you
alpha 0. So it means, hence this implies that alpha into 0 is equal to 0, 0 vector. So you have to use the properties, that identity property, then this vector space property, and this associativity. Okay, in this way only you can prove it. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. नाउ टेक बी पार्ट. देखो बी पार्ट में मुझे 0 स्केलर लेना, ध्यान रखना यू वेक्टर है ना. सो लेट अस टेक बी पार्ट. So in B part you have to show 0 u is equal to 0. So again I will take the left hand side 0 u, है ना. अब u वेक्टर तो आपके पास है, लेकिन 0 आपका स्केलर है, और स्केलर की आइडेंटिटी 0 होती है, यू नो, फ्रॉम सेट ऑफ रियल साइड नंबर. का वेक्टर 0 है कि स्केलर 0 है राइट साइड हाँ, बी पार्ट में बी पार्ट में क्या, राइट साइड का वेक्टर 0 है कि स्केलर 0. ये हाँ सर. ये वेक्टर है ना, बिकॉज यू आर टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट. तो प्रॉपर्टी क्या होती ठीक है है, स्केलर प्रोडक्ट की, एफ क्रॉस वी शुड गो टू बी. तो ये वेक्टर है आपका, है ना. रिजल्टेंट ठीक. हमेशा वेक्टर ही आएगा. So I want to show 0 u is equal to 0 vector. So I will take 0 u. Now I don't know about u, but I know 0 is a real number. Real number is a field. It is a group in fact. So I can write 0 को अब की बार मैं 0 plus 0 लिख दूंगा, है ना. Because 0 is the identity, so I can write 0 plus 0 u. Same thing जैसे हमने पीछे की थी. और अब because it is a vector space, so alpha plus beta u is equal to alpha u plus beta u. So I can write 0 u plus 0 u by the property alpha plus beta u is equal to alpha u plus beta u, because this is a vector space. Okay, now same thing. देखो अब मुझे क्या लाना है, 0 u is equal to 0. तो एक 0 u रिमूव करना पड़ेगा. तो क्या करते हैं अब की बार, एड बोथ साइड. एडिंग, भाई हमें एक साइड 0 लाना है. 0 कब आएगा, जब आप इसका इनवर्स ऐड करेंगे इसमें. ओके, जैसे वहां पर इनवर्स आपके पास अल्फा 0 का इनवर्स माइनस अल्फा 0 था. 0 u का इनवर्स क्या होगा, माइनस 0 u वेक्टर. देखो 0 u को मैं 0 नहीं लिख सकता यहाँ पे, क्योंकि यही तो हमें प्रूव करना है. तो 0 u को आई विल हैव टू राइट 0 डॉट u एज इट इज. इसको मैं डायरेक्ट 0 नहीं लिख सकता. मैं अभी 0 u को 0 नहीं लिख सकता अभी, क्योंकि यही तो हमें प्रूव करना है. इसीलिए मैं 0 u को 0 u ही लेकर चल रहा हूँ. ये हमने मान लिया कि कोई एलिमेंट होगा नया, तो 0 u ही लिख दिया हमने. तो एडिंग 0 u बोथ साइड्स we get, so you know when you will be adding, so minus 0 u plus 0 u. सेम थिंग हेयर. देखो इसमें एडिशन भी होता है कि अगर कोई आप लेफ्ट में ऐड कर रहे हैं तो इधर भी लेफ्ट में ही ऐड करेंगे, ऐसा नहीं उधर राइट में ऐड कर दो, है ना. इट इज द वे ऑफ राइटिंग इन अलजेब्रा. तो इधर ही ऐड करेंगे हमेशा. और ये दो वेक्टर्स आपके थे 0 u प्लस u पे मैं कैप लगाऊं या ना लगाऊं, अंडरस्टूड एज आई टोल्ड यू कि स्मॉल u v दे विल बी वेक्टर. So now you know this thing, 0 u plus 0 u, it is what? It is 0, है ना. 0. तो आपके पास इसका इनवर्स है, हमें पता है, this is the additive inverse, so it will become 0 vector. And right hand side you will be having, again I can take associativity in these two, so I can take minus 0 u plus 0 u, ये vector ये u of course, and associativity से and separating this 0 u. Now again because sum of element and its inverse, it will be 0, so it will be 0 and plus 0 u, and 0 plus something is again the same element, because 0 is the identity of vector space here also. So this implies that this is nothing but 0 u. So this implies that 0 into u vector is also 0. तो इससे एक बात पता चली हमें, 0 वेक्टर है ना. यहाँ स्केलर था कि if you are taking 0 as a scalar or as a vector, resultant will always a 0. Is it clear? Yes sir. C part is minus 1 u is equal to u, है ना. आपको शो करना है minus 1 u is equal to minus u, मतलब minus will multiply in the vector and it will reduce to minus u. देखो इसको कैसे करेंगे हम, आई विल. तो अगर आपको ये इज इक्वल टू करना है, तो मैं अगर ये शो कर दूं, मान लो कि माइनस 1 u प्लस u इज इक्वल टू 0, अगर हम ये शो कर दें तो ये चीज तो आ जाएगी.
है ना। अगर हम ये शो Yes, करते हैं sir. तो ये आ जाएगा, क्योंकि अब हम ये क्यों लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने अभी ऊपर शो करा है कि 0 इंटू समथिंग इज 0, तो हमें ए और बी प्रॉपर्टी का यहाँ पे थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, आई विल टेक विद दिस, तो आई एम टेकिंग -1 u प्लस u, हम इससे लेके चलते हैं। ओके, अब इससे क्या होगा, ये u का मतलब क्या है 1, u मीन्स 1 डॉट u, इट इज बेसिक थिंग है ना। u को मैं हमेशा क्या लिख सकता हूँ, 1 डॉट u, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो नाउ बाय द प्रॉपर्टी, ये जो अभी हमने प्रॉपर्टी लगाई थी देखो ये वाली, अब इसको मैं रिवर्स लगाऊंगा, अल्फा प्लस बीटा यू वाज अल्फा यू प्लस बीटा यू, तो अल्फा यू प्लस बीटा यू इज हाउ मच, अल्फा प्लस बीटा यू, तो यहाँ पर आपका अल्फा -1 है, बीटा +1 है, सो दिस आई कैन राइट -1 प्लस 1 यू, लिख सकते हैं नहीं बाय दिस प्रॉपर्टी इन द रिवर्स। Yes, sir. एंड यू नो दैट -1 + 1 दे आर सिंपल, ये स्केलर्स हैं आपके, दे आर कमिंग फ्रॉम रियल नंबर्स, तो इनका सम 0 होगा ही आपके पास, बिकॉज इट इज इनवर्स, सो दिस इज नथिंग बट इट इज 0u, 0 स्केलर u वेक्टर। और अभी हमने क्या प्रूव करा, 0 इंटू यू इज हाउ मच, 0 vector. अभी हमने प्रूव करा बाय पार्ट बी, है ना, बाय पार्ट बी, क्योंकि प्रूव कर दिया तो नाउ आई कैन अप्लाई। सो यू गॉट -1 u प्लस u इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स व्हाट, तो बाय द ग्रुप प्रॉपर्टी कि इफ यू हैव a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ग्रुप प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a प्लस बी 0 होता है तो उसमें इसका मतलब क्या होता है कि b इज द इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू, इसका मतलब ये इसका इनवर्स है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट -1 u इज इक्वल टू -u। So in this way you can prove these properties। बताइए भाई, मजा आया नहीं आया करने में, आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी सी चीज में इतने स्टेप लगाने पड़ेंगे हमें। तो बिकॉज वी हैव अ वेक्टर स्पेस सो आई कैन डू ऑल दीज थिंग्स, है ना, क्योंकि वेक्टर स्पेस से मेरे पास ये प्रॉपर्टीज थी। अगर ये वेक्टर स्पेस नहीं होता तो हम इस चीज को प्रूव नहीं कर पाते। बताइए और कोई अगर डाउट हो तो, फिर नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज ऑन दिस। So there are some problems. Oh, less than a minute is there, class is time over. Okay, so I will continue in the next class tomorrow. So I will take some, Yes, sir. है ना, I will take some problem set 3.1. Here we have several problems. Some problems I will discuss here, some problems you will do. So all of you please be present tomorrow. I have next class also because, okay, Okay, sir. Yes, sir. चलिए, I am ending my class. Goodbye, Allah.